once again. हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम लोग एक केस लॉ समझने का प्रयास करेंगे। वह केस लॉ है नमन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ केस लॉ, namely नमन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. This case law relates to the maintainability of the FIR. इस केस लॉ में FIR के मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठा था, उससे संबंधित है। इन दिस केस लेट अस फर्स्ट हैव फैक्ट सिचुएशन। इस केस के हम लोग तथ्यात्मक परिस्थितियों को देखते हैं। रेस्पोंडेंट नंबर 4 लॉज्ड ए कंप्लेंट विथ द SDM उन्नाव, claiming that she had been duped into taking admission in an unrecognized institution. The SDM, the very same day, directed the police to register a first information report. ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है, उसने SDM उन्नाव के समक्ष एक कंप्लेंट दिया और SDM ने उसी रोज पुलिस को निर्देशित किया कि वो FIR दर्ज करे। इस तथ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पिटिशनर ने यह दलील दिया कि इसमें कुछ भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कारण कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले ही प्राप्त कर लिया गया था छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से, और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया गया था 3 वर्षीय विधि कोर्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। एफिलिएशन भी ग्रांटेड था यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो अपेलेंट्स था, जो पिटिशनर थे, उसने 3,50,000 रुपया BCI के पास भी जमा कर दिया था और अब वह इंतज़ार कर रहा था परमिशन का कि परमिशन मिल जाए तो वह लॉ कोर्स स्टार्ट करे। और ये तथ्य जो है सभी स्टूडेंट्स को ये मालूम थे, इसलिए इसमें कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि नहीं, इसमें फ्रॉड है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पर फैसला नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक भिन्न ग्राउंड पर फैसला किया। व्हाट वाज दैट ग्राउंड? दैट ग्राउंड वाज वेदर द FIR is maintainable. And in order to solve this question, the Supreme Court framed 2 questions. First question was whether the sub-divisional magistrate was competent to do so, and whether such an FIR can be said to have been registered in accordance with the Code of Criminal Procedure 1973. तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये 2 सवाल थे कि क्या SDM ऐसा करने के लिए सक्षम था, और कि क्या FIR जो इस तरह से दर्ज हुआ है वह FIR CRPC के अनुरूप दर्ज हुआ है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सेक्शंस का रेफरेंस दिया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड टू 4 सेक्शंस, सेक्शन 154 and 154 subsection 3 and section 190 and section 200. In this case, the Supreme Court examined the mechanism for registration of the FIR. And what was that mechanism? That section 154 of CRPC provides for registration of FIR at the instance of an informant. This information may be in writing, or if it is oral, it may be reduced into writing and signed by the person giving it. And section 154(3) provides for the informant to inform the SP through post
writing the substance of the information, and if the SP is satisfied, yes, a cognizable offense is made out from the perusal of the information, then the SP will direct the investigation. Further, subsection 3 of section 156 enables the magistrate to order registration of FIR. Thus, examining all these provisions, there was one more section too. That section was 200. Under this section, a person is entitled to file a complaint in the court. Through these 4 sections, the Supreme Court examined the mechanism for the registration of FIR. And after this examination, the Supreme Court came to the conclusion that the executive magistrate has no role to play in directing the police to register an FIR on the basis of a private complaint lodged before him. And on this basis, the Supreme Court was pleased to quash the FIR. The importance of this decision lies in the fact that this case examined the mechanism for the registration of FIR and the effect of an FIR that is lodged or that is not in accordance with the provisions of CRPC. So, if an FIR is lodged and that FIR is not in accordance with the provisions of CRPC, that FIR is not maintainable. So, if you have any question, you may ask in the comments box. Thank you.